Okay, so we start this chapter, right? Vectors. We should know what is coordinate system. Okay, first we should know what is coordinate system. Okay, now when you talk about coordinate system, we talk about x-axis, y-axis, right? And about x-axis and y-axis. Suppose we have this x-axis. Sorry, this is y-axis, and this is x-axis, right? Okay. Now we know that the x coordinates 1, 2, 3, 4, and so on, right, are called as abscissa, right? -1, -2, -3, -4, so on. This is 0. We have 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, right? This is my coordinate system. Yes, this is my abscissa and ordinate. X-axis is your abscissa, y-axis is your ordinate. Now suppose if I have to plot a point, suppose I have to plot a point which is 2, 3. ठीक है? 2, 3, right? So what is the meaning of 2, 3? Tell me. Two x-axis, yes, and 3 y-axis. So this is your point. ठीक है? Right? Now just think about this. Suppose someone started from origin. Suppose someone started from origin, okay, and after time t, he reached this point. He reached this point. Then tell me, what is the displacement? Tell me, what is the displacement? Can I say that this will be the displacement? Yes or no? I asked that someone who started from origin reached this point 2, 3. Yes? Okay. So I asked, what is the displacement? The displacement will be this point 2, 3. Yes? Very good. So if I'm saying that vector is just a mathematical tool, okay, vector is a mathematical tool which is used to represent my physical quantity which has both direction and magnitude. Okay, so when we talk about quantities, physical quantities, physical quantity, right? It is of two types, right? Either it can have only magnitude, right? Or magnitude as well as direction. Yes or no? Tell me. Yes or no?
right? So physical quantity is of two types. Physical quantity with just magnitude and physical quantity with both magnitude and direction. Yes? Okay, very good. Now, can you example of physical quantity with magnitude only? Right? Yes. Anyone? Yes. Temperature, distance, speed, right? Yes. Time, mass, very good. So these all are physical quantities with magnitude. Yes, energy, work, these all are called as scalar quantities, right? Scalar means value. Okay, scalar quantities. Got it? Right? These all are called as scalar quantities. But when a physical quantity will have both magnitude and direction, it is called as vector quantity. Okay? Example, tell me, displacement. Yes, displacement, velocity. Yes, velocity. Then, yes. So, weight is actually your force. Okay, it's a gravitational force. Mass into acceleration, right? Is your force. Okay, and force due to gravity is your weight, right? Force, momentum, yes, momentum, right? Acceleration. These are vector quantities. Yes, got it? Okay. Now, when we talk about vector quantities, it has both magnitude and direction. Okay, both magnitude and direction. So it needs a mathematical tool to be represented, right? That mathematical tool is your vector. Okay. For example, the statement that I said that the displacement of, suppose displacement of particle from origin to this point is this straight line. So I can represent this by a vector. So the starting point is origin and the end point is this point 2 comma 3. So the end point is represented by an arrow. Okay, got it? Okay. So it is represented by an arrow whose tail starts, yeah, whose tail represent starting point, okay, and whose head represents final point. Got it? Right? Now, if you see this vector, this line represents a vector. Now, which kind of vector? It just, see, that's thing. Vector describe both magnitude and direction. Host one, just message me on host, not co-host. Message me on host. No, no, friction is a force, right?
So force is a vector. Every kind of force is a vector. Okay, every kind of force is a vector. So see, this is your displacement, right? So this is called as displacement vector. Displacement vector. Okay, or specifically, this vector represents the position. So it is your position vector. ठीक है? Right? Position vector. Got it? समझ में आया वेक्टर क्या होता है? समझ में आया वेक्टर क्या होता है? Tell me. Everyone got this? Yes? Okay, very good. Now, just tell me this. This is my vector. Okay, right? This is my vector. Starting point, origin, end point is this point. This blue point. Okay? Now, if I ask you, if the coordinate of this point is a comma b, what is the meaning of that? Tell me. If the coordinate of this point is a comma b, then what's the meaning of that statement? Its location, yes. So what is a? A is x coordinate and b is y coordinate. Yes, very good. So I can say that x coordinate is represented by a, y coordinate is represented by b. Okay, so if I draw both x and y coordinate and this vector, right? Got it? We will get a right angle triangle. Yes or no? We'll get a right angle triangle with x coordinate as base, y coordinate as perpendicular, and your vector as hypotenuse. Got it? And this angle is the angle of the vector with respect to x-axis. Got it? Now just suppose the length of this vector is r. Suppose the length of this vector is r, then what is your x component and what is your y component? Just tell me. What is your x component? What is your y component? Tell me. ठीक है, very good. Yes, Yashash, it means same. ठीक है. Now, when you talk about vector, first thing, as you remember the definition of displacement, that path is irrelevant. Means a vector is only the straight line which joins initial point and final point. That's it. Okay. For example, displacement. You don't have to worry that the path is circular or ellipse or anything. Okay. Displacement will always be the shortest path. Okay. That's why the displacement or the vector, displacement is an example of vector, right? Is your straight line which joins initial parameter and final parameter. ठीक है? Right? My question was, if the length of vector, right, which is your hypotenuse, is r, then what is the x component
and y component if it makes angle theta. Got it? Yes, yes. You have to use trigonometric functions. No, not tan theta, na. X component is your base, right? So x is cos theta is equal to x by r. So x is r cos theta, na, right? No, x is r cos theta and y is r sin theta. Got it? यार अभी गलती मत करो. प्रहलाद सही था, वेरी गुड, राइट. विकास गलत है, ठीक है. अबे गलत है. आर का वैल्यू पता है, थीटा पता है, ठीक है. You know the value of hypotenuse, which is r. I'm saying that hypotenuse is r. Okay, hypotenuse is r and theta is given. अरे इसमें नहीं समझने वाला क्या बात है. पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है, राइट. मैंने hypotenuse दे दिया और बेस ऑफ परपेंडिकुलर पूछा. मैंने सिंपली परपेंडिकुलर और बेस पूछा है hypotenuse देकर. तो ट्रिग्नोमेट्री का टी नहीं आता तुम लोग को, बताओ. एक राइट एंगल ट्रायंगल में hypotenuse दिया हुआ है और परपेंडिकुलर और बेस पूछा है इन टर्म्स ऑफ hypotenuse, राइट. दिस इज समथिंग व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल, राइट. डिवीजन तो करना है ना. मैंने कुछ नया नहीं बताया, कुछ नया नहीं बताया अभी तक, ठीक है. नाउ दिस इज योर coordinates if the magnitude of vector is given and the angle is given. Got it? Right? The length of this hypotenuse or length of the vector is the magnitude of the physical quantity. Got it? Right? Now, ये समझ में आया कि magnitude क्या हो रहा है, angle क्या हो रहा है, and all those things. Now, how to represent a vector? Okay. Now, for vector, direction is very important. Okay. So, in order to represent the direction, we have different signs. For x-axis, the sign is I cap. I cap means direction in x-axis. Okay, right? For j we have, for y we have j cap. Okay, and for z we will have k cap. Okay, which means if I'm writing 2 I cap, बता इसका मतलब क्या है? What is the meaning of 2 I cap? Tell me. Meaning of 2 I cap क्या हो जाएगा?
Yes, very good. So it means 2 unit along x-axis. What's the meaning of 3j cap? Tell me. 3j cap? 3 in the y-axis. Very good. So what's the meaning of 2 I cap plus 3j cap? इसका मतलब क्या है? Tell me. This represents point 2 comma 3. Yeah, very good. So I can say that a vector can be represented as xi cap plus yj cap plus zk cap. Yes or no? Right? This is the direction of a vector in x-axis, y-axis, and z-axis. Okay. Now I cap just represents a vector in x-axis. Y axis is represented by j cap, and z axis is represented by k cap. Okay. So for 2 dimension, right? We represent 2 I cap plus 3 j cap. Suppose a point is in 3 dimension, so it is represented by x I cap plus y j cap plus z k cap. ठीक है? For example, if you have to represent 2 comma 4 comma minus 1, this is your point in 3 dimension. Okay, point in 3 dimension. Then tell me how to represent this. Tell me. Guys, is my handwriting not visible? Tell me, is my handwriting not visible? No, Yashash is saying it's too small, but I don't think that it is too small. Yashash, कहाँ देख रहे हो? I'm seeing my phone and it is clearly visible. Is there anyone? Okay, so I'll write bigger. Okay, I don't think. See, okay, I'll try to write bigger. See, if I write it bigger, there'll be less space. Okay, that's the thing. So it will be r vector is equal to 2 I cap plus this is 4. Okay, this was 4. 4 j cap minus 1 k cap. Got it? Right? What is y dash? No, what is x dash, y dash, z dash? Someone is asking what is where to represent x dash, y dash, and z dash. See, it is a representation. A vector is represented by this arrow. Okay, right? But when you have a cap, it means it just represents direction, means magnitude is 1. Okay, so if you're writing I cap, it means x direction and magnitude is 1.
if you're writing j cap, it represents y direction, magnitude is 1. Okay, got it? Now what is the meaning of minus I cap? Tell me, what's the meaning of minus I cap? K cap represents z axis. Okay, K cap represents z axis. Yes. So minus means opposite direction. In vector, minus means opposite direction. Okay. What is okay? You represent it by dash. X dash means negative axis. Okay. We just say it is negative x axis. Okay. Right? That's why someone was asking what is meaning of x dash y dash. Okay. So it's complement, right? So we represent with a negative sign. As we represent a number line, as simple as that. 1 is your positive x-axis, -1 is your negative x-axis. As simple as that, na? Right? The same thing is used in vectors. Now we have which message? I can just see you. Are my message is reaching? That's it. Okay. Z cap. Z cap नहीं है. Z K cap है. जैसे x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. Direction is represented by I cap. Okay. Direction is represented by I cap. R vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. Okay. So z is your value and k cap is used to represent z axis. Got it? समझ में आया? Cap is representation. ठीक है? Cap is just a representation to represent the direction. ठीक है? अगर किसी में कैप है तो इट मींस कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है? एंड इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. गॉट इट? ये सबको समझ में आ रहा है? सबको ये समझ में आया? सबको ये समझ में आया? टेल मी. यस एवरीवन. यशश, मानसी, ठीक है? शिव, सृष्टि, एवरीवन इज गेटिंग दिस? ठीक है, वेरी गुड. सो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ देखा कि वेक्टर क्या होता है. जैती एक और एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा. ठीक है? एक और एग्जांपल देखेंगे. जानवी एक और एग्जांपल देखेंगे. राइट? आई विल जस्ट एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल. ओके? Now just see this point. I'm having a point 3, 4. Let's talk about 2 dimension for now. ठीक है? 3 dimension में नहीं जाएंगे, 2 dimension में जाएंगे. ठीक है? First, let us understand 2 dimension. So 3, 4. What's the meaning of this? It represents a point whose x-axis is 3, y-axis, right? Or y component is 4. Got it? Yes. So if I have to represent this point by a vector, so it is represented by R vector. This is your representation of a vector, and this is your point, so it is your position vector. Now x component is 3. 3 is your magnitude.
and it is in x axis. So I will represent I cap, which will represent the direction, plus 4 j cap. Got it? Yes. Okay. Now this is the dimension. Now someone need to know why it will be always negative. If I'm saying 2 comma 3 comma 1, okay, what's the meaning of this? 2 comma 3 comma 1. Tell me. First of all, what do you understand by 2 comma 3 comma 1? Batao. What do you understand by 2 comma 3 comma 1? See, all are positive और नेगेटिव मत करो, राइट? वैल्यू क्या हो रहा है ये सोचो, ठीक है, राइट? और किस डायरेक्शन में कितना वैल्यू है वो सोचो, ठीक है? कंसेक्यूटिव एंड ऑल कहां से आ गया, राइट? सिंपली इसका मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है और z कोऑर्डिनेट 1 है. यस, ये समझो. ठीक है, गॉट इट? नव्या, अव्य, सबको समझ में आया? कृष्णा? यस. सो आई कैन से दैट x कंपोनेंट कितना है? 2 यूनिट्स, y कंपोनेंट 3 यूनिट और z कंपोनेंट 1 यूनिट. पहले ये समझो, ठीक है, राइट? सी, पेपर तो 2 डायमेंशन का ही होता है ना, ठीक है? सो 3 डायमेंशन समझना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग अराउंड अस इज इन 3 डायमेंशन, ठीक है? पेपर पे 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 3 comma -4? टेल मी. 3 comma -4 का मतलब क्या है? टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 3 comma -4? बताओ. x एक्सिस में x में 3 यूनिट, राइट? y एक्सिस में. नाउ अब देखो, -4 यूनिट का कोई मतलब नहीं होता है ना? -4 बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट? सो y कंपोनेंट 4 ही होगा, बट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट, है ना? कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना? इट मींस इट इज नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है? इट इज नेगेटिव y एक्सिस. y एक्सिस -4 नहीं, माइनस y एक्सिस, राइट? नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है? सो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, सो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? गॉट इट? So when you talk about the distance, it is always positive. Negative sign means direction. Means if I'm writing -3 I cap, right? It means the 3 unit in minus x axis. Got it? 3 unit in negative of x axis. Got it? ठीक है? Yes, cap is a symbol. Cap is a symbol. ठीक है? Got it? जानवी, पुनीत, अव्य, कृष्णा, सृष्टि, सबको समझ में आ रहा है? सो अब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो माइनस कहीं भी लिखो, इट इज अंडरस्टूड. फॉर एग्जांपल, सी दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 i cap प्लस 3 j cap प्लस 1 k cap और जस्ट k cap, ठीक है? बिकॉज 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. It is understood. Got it?
अब समझ में आया? 2, 3, 1 is your 2 I cap plus 3 J cap plus K cap. Yes or no? Tell me. सबको समझ? Everyone got this? ठीक है? Okay. Very good. Now, एक चीज बताओ, राइट? तुमने यहां से चलना स्टार्ट किया, शाकिब, तुमने यहां से चलना स्टार्ट किया, राइट? तुम चल रहे हो ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट? तुम 4 मीटर चलोगे कि -4 मीटर चलोगे? टेल मी, तुम 4 मीटर चलोगे कि -4 मीटर चलोगे? नेगेटिव इज जस्ट डायरेक्शन, ओके? अगर तुम बोल रहे हो 4 मीटर, 4 मीटर माइनस एक्स एक्सिस में, राइट, या -4 मीटर एक्स एक्सिस में, दोनों का मतलब सेम होगा। समझ में आ रहा है? राइट? बिकॉज -4 मीटर मतलब तुम जहां स्टार्ट किए उससे पीछे जा रहे हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? राइट? बट जनरली डिस्टेंस इज रिटन एज पॉजिटिव वैल्यू एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? गॉट इट? राइट? So 3 comma minus 4 will be represented as R vector is equal to 3 I cap, now minus 4 J cap, ठीक है? Right? 4, or it can also be written as 3 I cap plus 4 minus J cap, ठीक है? Same है ना, because multiply हो रहा है, so it's same, ठीक है? Got it everyone? सबको समझ में आया कि पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है? नव्या समझ में आया? जयती, मनसा, सृष्टि, ठीक है? राइट? सो वी विल राइट सम प्रॉब्लम्स। सबको अपने 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 नोटों पे लिखो, ठीक है? रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? दीज पॉइंट्स, ठीक है? रिप्रेजेंट देम इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है? रिप्रेजेंट देम इन वेक्टर फॉर्म। नितिन, स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है? सो ट्राई टू लीव एंड ज्वाइन। So first is 2 comma 3 comma minus 4, ठीक है? 2 comma 3 comma minus 4 अभी करना है, होमवर्क नहीं है, अभी करना है। Solve and send the answer, okay? So today we will know how to represent a vector, okay? ठीक है? Very good. So A is
सबको समझ में आ रहा है ना? ए, सो आई कैन से दैट ए वेक्टर है ना, रिप्रेजेंट करने के कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो ए वेक्टर इज योर 2 i cap, very good, plus 3 j cap, right, minus 4 k cap. सबको समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड. सो सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला. सी इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, राइट. सो बी इज बी वेक्टर, वेक्टर के ऊपर ये एरो का आना जरूरी है, ठीक है. माइनस 1 आई कैप और जस्ट माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस 4 k cap, plus 4 k cap minus 5 j cap, sorry, plus 4 j cap, है ना, minus 5 k cap, ठीक है. Then C vector is your minus I cap. So इसको minus 1 I cap लिखो या just minus I cap लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. Plus now 0 j cap is 0, तो तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो plus 1 k cap. Got it? Yes. ठीक है. Now D is your minus 5 k cap, right? Or you can write 5 minus k cap, दोनों सेम है, ठीक है. No, here I is not iota. ये तुम लोग कहाँ से क्या क्या चीज पढ़ लेते हो, ठीक है. I is not iota. I is just direction. हर जगह I का मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है. Got it? सबको रिप्रेजेंट करने आ गया? टेल मी, सबको रिप्रेजेंट करने आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? पहला कॉन्सेप्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, राइट, ठीक है, दैट्स इट. फर्स्ट, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज टू नो व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द डायरेक्शन. ओके, ठीक है, वेरी गुड. नाउ सी दिस, we will generally talk about 2 dimension. Okay, we will extend it to 3 dimension. Okay, we will generally discuss 2 dimension, but we will extend the concept till 3 dimension. So suppose this is a vector, right? This is a vector where we have x coordinate, and y coordinate. Got it? Now x coordinate is a, and y coordinate b. This is the distance. A and B is your distance. Got it? Right? Tell me, yes or no? Yes, Janvi, you can write like that. Okay. Yes. So I can say that this is a vector. This hypotenuse is a vector. So R vector can be written as A I cap plus B j cap. Yes or no? Tell me. Yes or no? Yes? Okay. Now, tell me, what is the length of this hypotenuse? Tell me, what is the length of the hypotenuse? What is the length of the hypotenuse? R, नहीं, इसका value क्या है? In terms of A and B. What is the value of length of hypotenuse in terms of A and B? So hypotenuse is root of A square plus B square. Yes or no? Tell me. यशश, प्रहलाद, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम? Yes, right? Root of A square plus B square. Anyone have any issue in that? No, right? है ना? Now, I told you that hypotenuse or the length of the vector is called its
magnitude. It is called as magnitude. Magnitude of a vector. Magnitude of vector. ठीक है? So magnitude of vector is represented by mod of r. ठीक है? ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी, ये mod just representation है. Okay, it represents the value. Okay, the length of this vector. Got it? Right? It is called as magnitude. Got it? Yes or no? समझ में आ रहा है? Length of this hypotenuse or length of the vector is its magnitude, and magnitude is your absolute value. That's why we have modulus, right? Now this is equal to, again, root of a square plus b square, which is x component का whole square plus y component का whole square. ठीक है? Got it? As plus that. प्रहलाद, यहाँ पे मॉड का कुछ यूज नहीं है, बस समझ लो क्योंकि ये डिस्टेंस है, राइट? हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई मॉडुलस दिया गया है. और यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट इट एज नॉर्मल आर्क विदाउट योर एरो. ठीक है? ये भी रिप्रेजेंट करते हैं. गॉट इट? सो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है? गॉट इट? ये तो वैल्यू है ना, ये तो वैल्यू है. वैल्यू में डायरेक्शन का कहां से मतलब आया, राइट? ठीक है? दिस इज जस्ट अ वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू, एंड वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन. गॉट इट? राइट? वैल्यू इज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन. ठीक है? गॉट इट? See, length of the vector will be measured from origin. ठीक है? For now, it is always measured from origin. ठीक है? Right? And it's a ray, it's not a line कि तुम कहीं भी extend कर दो. It will have a start point and an end point. Got it? Right? Now tell me, अगर तुम्हारे पास point है 2,3, right? We have a point 2,3, so it can be represented as a vector, which is 2i cap plus 3j cap. Yes or no? Right? Yes or no? Right? Then the magnitude is given by root of 2 square plus 3 square. Yes? 2 square plus 3 square, which is root of 13. ठीक है? Got it? Right? है ना? ठीक है. Navya, for your question, right? अगर वेक्टर 3, -4 रहे, 3, -4 रहे, right? 3, -4. Tell me, what is a vector? Vector कैसे represent करेंगे? Our vector is 3i cap -4 j cap. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? Now, तुम्हारा -4 का होल स्क्वायर रहे या 4 का होल स्क्वायर रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? magnitude, right, will be root of 3 square plus 4 square. ठीक है? Because -j is your direction, so this is 5. R is 5. Got it? And how to represent this? Because देखो, डायरेक्शन कैसा भी है, बन तो रहा है ट्रायंगल ना, राइट? 3, -4, okay, is nothing but
this point, right? It is this point, something like this. Yes, Anna. So ultimately it is forming a triangle, right? Length of this hypotenuse is this square plus this square, as simple as that. Got it? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है? So I guess everyone got this, how to find the magnitude of a vector, right? है ना? If component is given. See, direction negative, मतलब direction उस direction में है ना? Magnitude is always the value. ठीक है? ठीक है? चलो, so ये हो गया. Okay. See, second triangle is your this point ना 3, -4. कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? 3, -4 यहाँ होगा ना, x3 y-4, राइट? ऑरिजिन से तुम ज्वाइन करोगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली ऐसा होगा ना, ये x कॉम्पोनेंट, ये y कॉम्पोनेंट, y को -4, x कॉम्पोनेंट 3, राइट? ट्रायंगल तो बन ही रहा है कि नहीं? गॉट इट? अब समझ में आया विकास? ठीक है? Yes or no? Tell me. Did you get this? Okay. Now try to find. Yes, obviously. पढ़ाने के लिए हर जगह तुमको एक ही कोऑर्डिनेट बनाएगा ना, चारों कोऑर्डिनेट में तो बना के नहीं दिखाएगा, कोई एक ही कोऑर्डिनेट बना दिखाएगा ना, राइट? इसका मतलब थोड़ी ना कि सारा पॉइंट और सारा वेक्टर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में रहेगा, राइट? अगर तुमको कुछ पढ़ाते हैं तो एक एग्जांपल देते हैं ना, राइट? है ना? सो दैट वाज जस्ट एग्जांपल. सो सपोज हम having वेक्टर, राइट? r is equal to I cap plus 3j cap. ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी बताओ. फिर दूसरा वेक्टर जो है वो है 4i कैप माइनस 6j कैप, राइट? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? और तीसरा वेक्टर जो है वो है 5i कैप प्लस 12j कैप और 5i कैप माइनस 12j कैप. तो सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सबका मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी टेल मी. पहला वाला शीर्षा 3 कैसे हो गया? i प्लस 3 है. Yes, it is vector in one dimension only. पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से. So first one is root of 1 square plus 3 square, which is root of 1 plus 9 is equal to root of 10. Root of 10. Yes or no? Yes. Right? Very good. पहला सबका हो गया. Second one, tell me. Root of 4 square plus 6 square, right? Which is equal to root of 16 plus 36 equal to, बताओ, root of 52. ठीक है? Which can also be written as 2 root 13. है ना? चलो. Third, root of 5 square plus 12 square, which is equal to root of 169, which is 13. Right? Now see this. 5 I cap plus 12j cap हो या 5 I cap minus 12j cap, डिस्टेंस तो सेम है ना, सिर्फ डायरेक्शन अलग है कि नहीं? So magnitude will be same. Magnitude will be same, only direction will change. Got it?
गॉट इट? सबको समझ में आ गया ये चीज? टेल मी, सबको ये समझ में आ गया अच्छे से? सबको समझ में आ गया तो अब चलो. So what we learned today? First, we learned what is vector, right? How to represent a vector. What is the components of vector? X component, Y component, right? And Z component, right? Then how to find the magnitude of vector. Yes? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? Yes? ठीक है? Okay, very good. So, see, magnitude, you have to understand. Distance is always positive. Distance is always positive, right? तुम लोग चैप्टर 1 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Right? Distance -5 मीटर का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब होता है क्या? Distance -5 मीटर का क्या मतलब है? Tell me. What's the meaning of distance -5 meter? Distance is 5 meter. Distance can never be negative, right? When I say -5, वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि उल्टा डायरेक्शन है. नेगेटिव जस्ट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, राइट? अगर ये इस साइड जाए या इस साइड जाए, डिस्टेंस विल बी 5 ओनली. डिस्टेंस 5 ही होगा. बट अगर तुम बोलोगे +5 या -5, it just represents the direction. So obviously नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को कि डिस्टेंस को? टेल मी. अपने आप सवाल पूछो ना, राइट? तो तुम ये सवाल पूछोगे ही नहीं, ठीक है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट? -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो खुद सोचो यहाँ पे -10 क्या है? -10 में कोई लॉजिक है? नहीं ना. एक्चुअली 10 न्यूटन, राइट? और -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में. जस्ट इमेजिन, राइट? -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में. इसका मतलब क्या है? The actual meaning is 10 न्यूटन का लग रहा है माइनस ऑफ एक्स एक्सिस में, राइट? अपोजिट डायरेक्शन में. So it's all about direction. Negative is all about direction. Got it? Yes or no? Tell me. समझ में आया? Okay, very good, right? ठीक है? So I guess सबको एक क्लियर हो गया है ना? So what are the concepts that we covered? Tell me, what are the concepts that we covered? We covered basics of vector, right? How to represent a vector, okay? Magnitude of vector, right? ठीक है. Okay. Thank you everyone, right? Hope you understood everything. Please watch this video. Okay.